Hello everyone, in this video we'll discuss on how to minimize the given Boolean expression, or in some of the cases they may ask about how to prove the following Boolean expressions. So whenever we are having such kind of questions, so we should follow certain rules, and that rules are going to be: number one, if the bracket terms are given, simply multiply the bracket terms. यानी कि सबसे पहले स्टेप ये देखना है कि कोई ब्रैकेट टर्म्स है तो उसको सिंप्लीफाई करो. सेकेंड स्टेप, ट्राई टू चेक इफ देर इज एनीथिंग दैट कुड बी टेकन एज कॉमन, यानी कि कुछ कॉमन निकलता है तो उस कॉमन को हम ब्रैकेट के बाहर भी ले सकते हैं. और थर्ड स्टेप में विल अप्लाई ऑल द लॉज और रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था. सो बेस्ड ऑन दिस थ्री मेथड्स, फर्स्ट ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन, second try to check anything common, and third apply the Boolean algebra rules. So based on that we can minimize or prove the following expression. So let us start with the first question, that is a plus a into b is equals to a. ये हमें प्रूव करना है. तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे LHS को. LHS is a plus a into b given. Now I can take a as common from these two terms. ब्रैकेट तो नहीं है तो हम कॉमन लेंगे. If I take a as common, we'll get 1 plus b. अब देखिए क्या आया हमारे पास, 1 प्लस बी. नाउ वी कैन अप्लाई ए बुलियन अलजेब्रा रूल दैट इज फ्रॉम और गेट, और वो रूल है 1 प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू 1. 1 प्लस एनीथिंग विल बी इक्वल टू 1, यानी 1 के साथ किसी को भी ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1. सो बेस्ड ऑन दैट आई विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट एज a into 1, which is going to be a. That is what required. A plus ab is equal to a. Now let us start with the second example, how to minimize or how to prove the given expression. So let us start with taking the LHS, as LHS is a plus c into a bar plus b. Now we'll apply the first step, as we'll multiply the bracket terms. So let us start with multiplication by a to this bracket term. We'll get a bar into ab plus, now we'll multiply with c. We'll get a bar c plus b into c. Now if we see this one, we can apply certain rules of Boolean algebra. In that, the very first rule, a into a bar, as we know that a into a bar will be 0. This is nothing but our AND gate law. I can write this term as ab plus a bar c plus b into c. Now let us look at the RHS. RHS is AB plus A bar C. AB plus A bar C, we got this term. That means we have to simply eliminate this product term as BC. अब इसको eliminate करने के लिए I can do one thing. Simply I will multiply BC with 1. What I did, I have multiplied BC with 1. It really doesn't hamper any of the situation, but I have simply multiplied this with 1. अब इस 1 की जगह पे हम एक वेरिएबल ऐड करेंगे. अब देखिए इस एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स है, a, b और c, यानी 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल यहाँ पर अवेलेबल है, एक है b और एक है c. तो बेस्ड ऑन दैट आई विल राइट दिस टू प्रोडक्ट टर्म्स एज इट इज ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी को इसी तरह से लिखेंगे, और इस 1 के जगह पे यूजिंग लॉज ऑफ और गेट आई कैन राइट दिस एज a प्लस ए बार, बिकॉज a प्लस ए बार इज गोइंग टू बी 1. क्यों ये एडजस्टमेंट किया है, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल ऑलरेडी प्रेजेंट थे b और c, तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट आ सकता है वो a का हो जाए, इसलिए मैंने लिखा है इसको a प्लस ए बार. अब ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार इंटू बी सी. अब चेक करेंगे कुछ कॉमन निकलता है क्या. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म ए बी, यहाँ पर है और यहाँ पर है ए बी सी. दैट मीन्स फ्रॉम दिस टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट टर्म्स आई कैन टेक ए बी एज कॉमन, तो मैंने ए बी को कॉमन निकाला है. सो वी आर लेफ्ट विथ, यहाँ से बचेगा 1 प्लस फ्रॉम दिस विल गेट सी प्लस नेक्स्ट टू प्रोडक्ट टर्म्स. वी आर हैविंग नेक्स्ट टू प्रोडक्ट टर्म्स ए बार सी, ए बार बी सी. नाउ फ्रॉम दिस टू प्रोडक्ट टर्म आई कैन टेक ए बार सी as common. So when you take a bar c as common, we will be left with 1 plus b. Now again we'll apply the rule of OR gate. 1 plus anything will be 1. That means 1 plus c is equal to 1, or 1 plus b भी हो जाएगा 1. So if you apply this rule, finally we can get ab into 1 plus a bar c into 1, and that will be our RHS as ab plus a bar into c. So this is how we can prove this particular
बुलियन एक्सप्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पर है एडजस्टमेंट ऑफ 1। सो जो वेरिएबल अब्सेंट हो जाएगा या फिर वो प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट यानी कि इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल देयर, तो उसकी जगह पे हम उस अनदर वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं। सो लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल as we have to reduce this particular expression. Fine. So now in this case again, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे. We'll write f is equal to a plus b multiplied with ac plus ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, we'll get bd plus c bar into d. This will be our first step. In next step we'll multiply this bracket term, और यानी कि सॉल्व करेंगे इसको. ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ईयर विल गेट ए बी सी प्लस दिस इज बी इंटू बी डी प्लस बी इंटू सी बार डी. अब यहाँ पर हम देखेंगे एनी रूल कैन बी अप्लाइड. तो ये देखिए यहाँ पर बी इंटू बी दिया है, वी नो दैट बी इंटू बी विल बी बी. द सेम वेरिएबल कैन बी मल्टीप्लाइड, विल गेट द सेम टर्म. And from this term I can take a as common. Okay, so we'll write a into 1 plus bc plus ये हो जाएगा bd plus b c bar d. हो गया. अब देखिए यहाँ पर another rule 1 plus anything आ गया. We know that 1 plus anything, 1 plus bc will be 1. So we'll get this term as a plus bd plus b into c bar d. अब further simplify करने के लिए this two product term में we are having bd bd, so I can take bd common, we'll get 1 plus bd into 1 plus c bar. Again वो rule आ गया, 1 plus c bar is equal to 1. We'll write this as a plus bd into 1, that is nothing but a plus bd. So this will be our reduced expression. Okay, I hope you are getting those points. Now let us take the next example. We are having three bracket terms. First is b plus bc, b plus b bar c, and next is b plus d. तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि दिस टू ब्रैकेट टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे. लेट अस स्टार्ट विद द मल्टीप्लिकेशन. हियर बी इंटू बी प्लस दिस टर्म बी इंटू बी बार सी प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू टर्म्स बी बी सी प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू टर्म्स बी सी बी बार सी, और सेकेंड ब्रैकेट टर्म है b प्लस डी का. विल कीप इट एज इट इज. नाउ विल ट्राई टू अप्लाई द रूल्स. देखिए कौन कौन से रूल हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर. सबसे पहले तो यहाँ पर देखें b इंटू बी, वी नो दैट b इंटू बी इज इक्वल टू b, दिस इज फर्स्ट. सेकेंड यहाँ पर है b इंटू बी बार, b इंटू बी बार विल बी 0. दिस इज नथिंग बट रूल्स ऑफ एंड गेट, एंड लॉ उसको हम बोलेंगे. सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए b इंटू बी दिया है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं सो वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन b इंटू बी बार. बेस्ड ऑन दैट आई कैन राइट b इंटू बी इज एज b प्लस 0 प्लस b इंटू बी विल बी b c प्लस b इंटू बी बार विल बी 0 इंटू c मल्टीप्लाइड विथ b प्लस d. ओके, सो लेफ्ट विथ व्हाट, ये तो 0 आ जाएगा, दिस इज 0. We are left with first bracket term है b plus bc into b plus d. Now again we'll simplify these bracket terms. सबसे उसके पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर b और b है, so we'll take b as common. I will be getting this as 1 plus c multiplied with b plus d. Again that rule, 1 plus c will be 1. So we'll get b multiplied with b plus d. Now just again one more time we'll solve this bracket. We'll get b into b plus b into d.
as you know that b into b अभी देखा था हमने, it is nothing but b, so it will be b plus bd. Now from these two terms I can take b as common, so we left with 1 plus d. Now we all know very well 1 plus anything will be 1, so finally I will get this term b into 1, that is nothing but b. So this will be a reduced expression using the laws of Boolean algebra. देखिए ये इतना एक ब्रैकेट टर्म दिया था, 3 ब्रैकेट टर्म्स, उसको हमने सिंप्लीफाई किया है, फाइनली क्या मिला हमें, ओनली अ सिंगल वेरिएबल एज b. So these are the few examples on reduction or minimization of the given Boolean expressions. Thank you.